Good morning, everyone. I am Shreya Dhyani, and today I am here to speak on the topic democracy and Gen Z like movement. So, democracy is a word that comes from the ancient Greek word demokratia. It's the combination of the two Greek words, first demo, which means the people, and second kratos or kratia, which means power or rule. The simple meaning of democracy is rule by the people. It is a system that builds on a beautiful promise that real power belongs to the ordinary citizen and every voice matters. But for decades, politics was treated like as an exclusive club. Young people were always told to wait for their turn. But modern Gen Z has completely flipped the script. They've shown the world that democracy is no longer just is about waiting at long lines and to vote once every few years. So they they have transformed the written, living, breathing, and daily movements happening right now in our digital space and on our streets. If we understand how this global change began, we have to go back in the year 2018 in the US. After a tragic school shooting in Florida, a group of teenagers decided that sitting at home was not enough. So they decided and they got angry and they frustrated. So they decided to launch a massive movement called March for Our Lives. By using social media, these high school students these high school students launched the March for Our Lives movement, and by this by using social media, these high school students started the massive movements, and at the same time globally kids millions of kids started a movement which is the Fridays for Future to demand a climate action. But this was the incidents that this was the birth of the modern Gen Z movement, fast, passionate, and completely unafraid of powerful authority. While the movement also happens in the neighborhood in the Bangladesh. So this the most powerful proof of Gen Z strength happened right in our neighborhood. Experts call the recent uprising in Bangladesh as the world's first successful Gen Z revolution. It was started by the university students peacefully protesting against an unfair job system. When the government tried to shut them down, the Gen Z united an entire country. They did not have money, but they had unity. So they coordinate medical aid through online groups, shared real-time updates, and stood strong together. In the end, their absolute teamwork forced a 15-year-old government regime to step down. This proved that when Gen Z stand up together, they can actually change the history of a nation. Right here in India, Gen Z is doing something incredibly unique. They are using internet culture, satire, and humor to fight for serious issues like unemployment and education. Recently, when a frustrated youth from India raised their voice about missing jobs and paper leaks, a critic mockingly compared them to cockroaches who do not have a place in society. Instead of getting insulted and taking it violent, the Indian Gen Z tried that insult into a powerful anthem. So they launched a satirical movement called Cockroach Janta Party. What started as an online joke quickly exploded into massive national platform with millions of followers.
Gen Z took this digital energy and turned it into peaceful, real world awareness. So, through videos, art, and creative symbols, they demanded accountability for fair exams and student rights, proving they can hold leaders accountable using digital unity. Now, their merits and demerits are merits. Everyone can raise their voice and be heard. A single video or post can create awareness very quickly. Third, leaders become more accountable because people are watching. Then their demerits are many people can only post online instead of taking real action. Second, fake news can spread quickly on social media, so they create unnecessary arguments and divide people. So, at last, in my opinion, Gen Z is playing an important role to strengthening democracy by raising awareness and speaking up for important issues. However, protest and movement should be always remain peaceful, responsible, and not harm the public property. And the focus is on only on the positive changes. Democracy becomes more accountable and strong when young people participated wisely and actively. Thank you. तो आपका टॉपिक था आज का कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड जेन जी लाइक मोमेंट्स इन अ डेमोक्रेसी। कभी भी हमारे पास जब कोई ऐसा पॉपुलर टॉपिक आता है और जिस पे हमें अपने थॉट्स, अपने विचारों को देना होता है, उस पर हमें जरूर देना होता है। अच्छा बोलने के लिए अच्छा लिसनर बनना जरूरी होता है, और जब तक हमें यह समझ में नहीं आता कि हम ध्यान से सुन नहीं सकते हैं, हम कभी बहुत बेहतर बोल नहीं सकते हैं। आप में से कई लगातार बोल रहे हैं, मुझे आवाजें बीच में सुनाई दे रही थी। यहां खड़ा कर दें, एक लाइन नहीं बोल पाएंगे। तो अगर बोलना सीखना है तो पहले ध्यान से सुनना सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं है तब तक हम बोल ही नहीं सकते। दूसरी बात, जब आप यहां बोलते हैं तो हमेशा इस चीज को एक दबी हुई चीज में, दबी हुई साउंड में नहीं बोलना चाहिए। खुल के बोलना चाहिए, ऊंची आवाज में बोलना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि हम मन से बोल रहे हैं, पढ़ के नहीं बोल रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं। ये जितना ज्यादा आपके पास बोलने का तजुर्बा गेन होता है, उतना ही अच्छा आप किसी भी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास एनर्जी आ जाती है। साथ में आप इंटरव्यू को बड़े अच्छे से फेस कर सकते हैं। हम लोग हर बार क्या करते हैं कि जब कोई इंटरव्यूज फेस करके आते हैं, कहीं पर एक डिबेट करके आते हैं, बाद में हम बोलते हैं अरे वो कमी थी, ऐसा रह गया, इस तरह का हो गया, मैं ऐसा करना चाहता था, मैं ऐसा परफॉर्म करना चाहता पर हुआ नहीं। उसी स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए तुम्हें यहां पर डिबेट में बुलवाते हैं, और इसलिए आपको जो है पूरे 4-5 दिन पहले टॉपिक दे देते हैं और बार बार कहते हैं आपको कि प्रैक्टिस ऑन दैट टॉपिक, कलेक्ट इंफॉर्मेशंस, और फिर उस पर वर्कआउट करना चाहिए घर में। एक बार बोला, 2 बार बोला, बोल के उसे रिकॉर्ड किया, और फिर खुद को ही देखा कि मैं पहली बार जब बोल रहा था तो कैसे बोल रहा था, दूसरी बार जब बोल रहा था तो कैसे बोल रहा था। तो आपका अपना बोलने का रिदम बेहतर हो जाएगा, और यही तो चीज चाहिए पर्सनालिटी के रूप में। व्यक्तित्व कहीं और से खुद निखर के नहीं आएगा। अगर आपका व्यक्तित्व उभरना है तो उसके लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो भी सामने किसी के। 2 तरह की प्रैक्टिस होती है, एक तो हम अपने खुद में कर सकते हैं, घर में गए, बोला, रिकॉर्ड किया और खुद ही सुन लिया, तो हमारे दिमाग में उस तरह का दबाव नहीं होता है।
क्योंकि वहां कोई है ही नहीं, गलत हो गया तो हो गया। बट जब आप पब्लिकली बोलते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं, यहां पर इतने सारे बच्चों के सामने जब आप बोलते हैं, तो आपके मन में, दिमाग में कई सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। गलत भी नहीं होना चाहिए, फैक्ट सही होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, घबराहट, वो सारी चीजें प्रेशर ब्रिंक क्रिएट करती हैं। और उससे बाहर आने का तरीका होता है प्रैक्टिस। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयार होके आया करें घर से, और यहां पर डिलीवरी किया करें। फिर वो हम आपका अपलोड कर देते हैं, आप उसे खुद देखा करो कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्या मेरा और बेटर होना चाहिए था। या जो दूसरे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आपसे आगे पीछे दिए हैं, उनका देखना चाहिए कि ये किस रिदम में बोलते हैं, किस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं, कैसा इनका जो है बॉडी लैंग्वेज होता है, कैसा इनका फेशियल एक्सप्रेशन होता है। ये सब चीजें बोलती हैं। बोलने में सिर्फ आपकी साउंड मैटर नहीं करती, बोलने में आपके हाव भाव भी मैटर करते हैं, आपका आई कम्युनिकेशन मैटर करता है, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन मैटर करता है, आपके हाथ के मूवमेंट मैटर करते हैं। ये सारे आपके कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। तो आप लोगों को उस बेस्ट को हासिल करने के लिए यहां पर बेस्ट करने की कोशिश करनी है। गलती हो जाए होने दो, तभी तो यहां पर कर रहे हैं कोशिश। मिस्टेक हो जाए होने दो, तभी तो यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहां पर जितनी गलती हो होने देनी चाहिए, ताकि अगली बार हम गलती न करें या गलतियों को सुधारें, और वो कर करके होनी है। दूसरा, जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए उसे, क्योंकि हम उतना बोलने की स्थिति में नहीं होते हैं उस टाइम पे। तो हमें दूसरे को बड़े गौर से सुनना चाहिए, तरीके से सुनना चाहिए। इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर, उसके विचार होते हैं, और अगर आप उसके विचारों से एग्री नहीं करते हैं तो आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। प्रश्न उठाने का भी हमारा जो है एक जज्बा होना चाहिए कि आई डोंट एग्री विद योर ओपिनियन एंड स्टेटमेंट। तो अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो आप अपनी बात उठाओ, वो बच्चा फिर उस पर जवाब देगा। इससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। यानी जब हम जो है क्रॉस क्वेश्चन के जवाब देना भी शुरू कर देते हैं, तो आपका मतलब है कि आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं जब आप अपना दिमाग चला रहे हैं, जब आप उन सारे नॉलेज का यूज कर रहे हैं जो आपने पिछले कई महीनों से गेन किया होता है। ये होता है तरीका। और जैसे अभी आप लोगों को तैयारी करके आना पड़ता है, तो एक टाइम के बाद ऐसा भी होता है कि एट ए टाइम में आपको बोला जाए कि डिलीवर अ स्पीच ऑन दैट सर्टेन टॉपिक, और आप उसे कर लेते हैं, क्योंकि आप कंपाइल करने में माहिर हो जाते हैं। फिर इंफॉर्मेशन ये वाली जोड़नी, ये वाली जोड़नी, ये वाली जोड़नी। तो कुल मिला के एक कॉम्पिटिटर के लिए इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता है पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने का। यूपीएससी, पीसीएस इंटरव्यू और तमाम जितने भी एग्जामों के इंटरव्यू होते हैं, उन सब जगह पर इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। कैंडिडेट सोचते हैं कि 10-15 दिन या 20 दिन में, 1 महीने में पर्सनैलिटी अच्छी करेंगे, कभी नहीं हो सकती है। इसे बेहतर बनाने में बहुत टाइम लगता है, और वो आप यहां पर अच्छे से अपना ग्रो कर सकते हैं। तो आगे जिसका भी नंबर पड़े, वो इस चीज को जरूर ध्यान रखे, खुल के बोला करो, दबाव में नहीं बोलना है, और बेझिझक बोलना है। शर्माना नहीं है। किससे शर्माना है और क्यों शर्माना है? और जब आप इस तरह की चीजों को छोड़ना शुरू करोगे तो बेस्ट डिलीवरी होने शुरू हो जाएगी। करेक्ट? तो आज इसको इतने रखते हैं। क्वेश्चन से